हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। BEGC 134। अगर आप BAG के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश आप स्टडी कर रहे हैं, सो ये सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। रीडिंग द नॉवल की बात करेंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे। मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू चैनल से जरूर बने रहें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी और लेटेस्ट जानकारी तो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो बात करेंगे आज फ्रेंड इस वीडियो में हम सेकंड यूनिट के बारे में, केट चॉपिन द अवेकनिंग। ठीक है, तो इसका सॉल्व आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट मी शो यू। ओके, सो द क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस द लोकेशन ऑफ द राइटर एंड सेटिंग ऑफ द नॉवल विद एग्जाम्पल इन द कंटेस्ट ऑफ द अवेकनिंग। तो अवेकनिंग के बारे में इसमें आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं और लोकेशन बतानी है राइटर की, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सो द आंसर इज लाइक अ crucial aspect of the location of the writer and her novel is the setting within which the action takes place. It begins on the Grand Isle, an island 50 miles south of New Orleans, a Creole summer resort, and goes on later to be situated in the city of New Orleans. The city was American, Southern, and Creole. The Creoles were the descendants of French and Spanish colonists of the 18th century. They were Catholics and believed in strong and conservative family values, spoke French and felt a close sense of community to their own cultural group. They formed approximately one third of the population of New Orleans in 1860. Thus somewhat separate in identity to Anglo-American society. So friends, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं या आप ओनली आंसर को सुनकर समझ सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज आई एम होपिंग कि ये आंसर आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा और आपको कंटेंट को समझने में मदद करेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे परसीव करना चाहते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वॉज easygoing and they liked to live a life rich in sensual pleasure and enjoyment. Even so, Louisiana remained a very conservative state, the patriarchal family being the foundation of the society, and even when the choral women appeared to be frank, open and sensual like Adele in the novel, they were in reality unquestionable chaste, religious and completely committed to their families. In fact, this is what makes their open manner possible, and we get a sense of contradiction reflected in the character of Adele, who is openly flirtatious with Robert and is at the same time to the true embodiment of the ideal devoted wife and mother. Edna is herself not from such a background, rather she is married to a Creole and at the start of the novel seems to be thrown into an atmosphere to which she is stranger. We hope we have done at least one reading of the novel by now. When Adele notices Edna awakening in the presence of Robert, she warns him, asking him to keep away from her, stating clearly, "She is not one of us, she may make the blunder of taking you seriously." Edna is described as Kentucky Presbyterian by birth, and her own reserved and rigid upbringing clashes with the open sensuality she finds here. Not only is she awakened and subsequently propelled by her infatuation for Robert to become an unthinking, drifty thing who has no anchor to restrain her, she is also attracted to Adele, and Millet resides in the strange, seductive scenario where the inviting sea also plays a part. New Orleans were also American, Calvinistic and puritanical, and when Edna returns to the city at the end of her summer flirtation, newly awakened to selfhood and sexual consciousness, she has to succumb once more to the conservatism of her social roles, receiving guests every Tuesday and supervising her husband's meal among other boring domestic chores. She does not wish to do any of this now, and thus she simply doesn't. Robert has done the honorable thing by escaping to Mexico, as he is too traditional to seriously imagine a
relationship with a married woman. Even towards to the end of the novel, when he turns confessing he has been imagining making her his wife despite his best judgment, he cannot visualize the kind of free relationship based on Edna's idea of liberty and self-definition that she suggested when she says, I give myself where I choose. Thus, for the second time in the novel, he runs away, leaving behind a note saying goodbye because I love you clearly indicated a clash of cultures. So this way we can say that how the writers is setting the example in the context of awakening and what was the location of the writer. The firstly we talk about the location of the writer and later we gave you the examples of awakening taken from the novel. So I hope ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी फ्रेंड्स। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। सो नाउ लेट मी शो यू द बुक फ्रेंड्स, जहां से आप इसी तरह के और भी आंसर्स रेफर कर सकते हैं। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बुक अवेल कराई जा रही है और साथ ही साथ फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सभी कंटेंट यूनिट वाइज दिया गया है, ब्लॉक वाइज प्रोवाइड कराया गया है और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं हमें मिल जाए। सो वो इस बुक में आपको इंक्लूडेड मिलेंगे और सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर आपकी प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। सो आप इसको देख सकते हैं, सारी डिटेलिंग्स बुक की अवेलेबल है। सो हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।